Good morning, students. In our previous video, I have explained you the story of Brave Hans. It is a story of a brave boy who have saved his country from being flooded. So after this, we will do some exercises, that is question answer. So what you have to write? You have to write lesson number 1, Brave Hans, and mention date here. Then answer the following question. Again, I am telling you that you have to write it, the name of the chapter, heading and question with black pen and answer with blue pen. And after every question and answer, you have to leave a line. So, question number 1. What are dikes? Yesterday I told you that dikes are long walls built to protect the land from being flooded. ऐसे बड़े बड़े ऊंचे लंबे लंबे दीवार जिसको इसलिए बनाया जाता था कि वहाँ समुद्र का पानी आकर उस लैंड को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया जाता था. सो आंसर इज डाइक्स आर द लॉन्ग थिक walls which we made along the sea to keep the sea water from flooding the land. Okay, so dikes are the long walls which are made along the sea to keep the sea water from flooding the land. Now leave one line. Then question 2. How did Hans spot the hole of the dikes? हंस ने डाइक पे जो होल है उसको कैसे खोजा? While coming back from school, when Hans was coming back from school, he heard the sound of seepage of water. उसने पानी के टपकने की आवाज सुनी. So in this way he spot the hole of the dikes. उसने इस तरह से डाइक में जो होल है उसको खोज निकाला. So you have to write answer like this. While coming back from school, all of sudden Hans heard. Here you have to write heard, H-E-A-R-D, heard the seepage of water. In this way Hans had spotted the hole. Now question number 3. What did Hans do to block the hole? होल को ब्लॉक करने के लिए हंस ने क्या किया था? हंस put his hand to block the hole. उसने अपने हाथ को होल में डाल दिया था ताकि वो होल को ब्लॉक कर सके. So answer, Hans put his hand into the hole to block it. उसने उसे ब्लॉक करने के लिए अपने हाथ को होल में डाल दिया था. Okay, now question number 4. What did the villagers do on seeing Hans unconscious beside the dike? डाइक के पास हंस को बेहोश देखकर गांव वालों ने क्या किया? On seeing Hans unconscious beside the dike, the villagers took his hand out of the hole and managed to block the hole by putting rocks and mortar. जब उन्होंने हंस को डाइक के पास बेहोश देखा तो गांव वालों ने क्या किया? उसके हाथ को होल से बाहर निकाला और उस होल को में रॉक और मोटार डालकर उसको बंद करने की कोशिश की. So you have to write, on seeing Hans unconscious beside the dike, the villagers took his hand out of the hole and managed to block the hole by putting rocks and mortar. Okay, then question number 5. How did that villagers thank Hans? और गांव वालों ने हंस को कैसे धन्यवाद दिया? कैसे दिया? The villagers showered gift and blessing.
और उन्होंने विलेजर्स ने हंस को बहुत सारे गिफ्ट दिए और आशीर्वाद दिए. तो द विलेजर्स थैंक हंस बाय showering them with gift and blessing. So the villagers thank Hans by showering them with gift and blessing. Showering बेटा यहाँ them नहीं होगा, यहाँ him होगा. Showering him with gifts and blessings. So these are 5 questions which you have to do in your copy, fair copy. एंड यू हैव टू मेक अ इंटरलीव कॉपी बनाओगे और इसे फेयर कॉपी में करोगे इन अ नीट एंड टाइडी वे. ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर एक्सरसाइज. ओके.